हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी पे तुम मनकर जो प्लस टू पिलांकर जो आनुअल एग्जाम हो 2024 तार सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन कर देते क्वेश्चन आंसर। तेणु आज ग्रुप सी तुम जो रही लंग क्वेश्चन चला लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तेणु यही लंग क्वेश्चन आंसर एमती लिखा जाई पारे। ताले वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मो चैनल जो मैंने नुआ अच्छ से रिक्वेस्ट जे चैनल टी सब्सक्राइब करदे एवं पाखु तुम सांग पाखु अधिक अधिक सेयार कर जहाँफल जो जिते इनफर्मेटिव वीडियो करा तुम पाखे सहजरे पहुँची जा। ताले तुमने तो परीक्षा दे सारी जे ग्रुप सी सेट ए रो ग्रुप सी क्वेश्चन हूँ लंग क्वेश्चन जोटा प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन 5 नंबर क्वेश्चन हूँ डिस्क्राइब द करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एडवोकेटेड बाय गांधीजी। गांधी मतरे मेथड्स ऑफ टीचिंग शिक्षादान पद्धति और करिकुलम पाठ्यक्रम कौन किपरि थिला। तार आंसर एमती लिखा जाई पारे। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ ऑफ गुजरात। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। ही वाज नोन एज द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन ऑफ आवर कंट्री। His contribution to educational reform in our country cannot be ignored. He was responsible for advocating a self-supporting scheme of education for a poor country like India. His Vardha scheme of education, which is in harmony with the latest scheme of education for our country. He was an idealist, a pragmatist, and also a naturalist. On the basis of such a background, he gives the meaning of education in his own words like, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। पे मैंने ये डेफिनेशनटा निश्चय तुम जानी जे गांधी मतरे शिक्षार एजुकेशन अर्थ कौन बा गांधी शिक्षा उपरे कौन डेफिनेशन बा संज्ञा प्रदान कर। तेणु एतिक लिखार कारण हूँ पे जेहेतु आम क्वेश्चन पचारि डिस्क्राइब द करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एडवोकेटेड बाय गांधीजी डायरेक्ट आम डायरेक्ट आंसर रे करिकुलम एवं मेथड्स ऑफ टीचिंग उपर लिखिले भल इंप्रेशन आसब ना। तेणु तुम मन कौन करने पड़ो ना गांधी उपर आग किसी लाइन्स लिखापी हम। तापर हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एम्स। व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी? द फर्स्ट एम इज यूटिलिटेरियन एम, द सेकेंड इज द कल्चरल एम, द थर्ड इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, फोर्थ इज प्रिपेरेशन फॉर कंप्लीट लिविंग, फिफ्थ इज कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सिक्स्थ इज ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। एटी आम पॉइंट गुड़ी को एलाबोरेट करने पड़ो ना कारण आमर क्वेश्चन डिमांड रही कौन ना करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तेणु करिकुलम और मेथड्स ऑफ टीचिंग परिवर्ते आम एति खाली एम्स आम दर्शाईदेले जे यही एम को फुलफिल करने गांधीजी करिकुलम एवं मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन एडवोकेट करते। नेक्स्ट कौन लिख ना लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट वाज द करिकुलम एडवोकेटेड बाय गांधीजी। व्हाट इज द करिकुलम? द करिकुलम or the content of study or the subjects of study of basic education of Mahatma Gandhi include the following aspects. What are they? They are basic craft. First point is basic craft in accordance with the local conditions of life and society. केमिति बेसिक क्राफ्ट हम ना इन अकॉर्डेंस विथ द लोकल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। समाजर एवं मनुष्यर जो लोकल कंडीशन रही जो अवस्था रही तारी अनुसार क्राफ्ट करा। सेकेंड हूँ मदर टंग टू बी लर्न फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड शुड एक्ट एज द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन। मदर टंग इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एजुकेटिंग ए चाइल्ड, सो इंपोर्टेंस शुड बी गिवन टू द मदर टंग। नेक्स्ट इज एरिथमेटिक which is correlated with the life situation and basic craft। एरिथमेटिक कौन आवश्यकता रही ना लाइफ सिचुएशन एवं बेसिक क्राफ्ट आवश्यकता रही क्राफ्ट रे आवश्यकता रही कारण ना एरिथमेटिक। नेक्स्ट इज सोशल स्टडीज which includes history, geography, civics and current events for promoting individual and social virtues। The next point is general science which includes nature study, botany, zoology, physiology, hygiene, chemistry, फिजिकल कल्चर एंड डोमेस्टिक साइंस फॉर गर्ल्स पिला झील मान कौन रहा डोमेस्टिक साइंस। नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड म्यूजिक
एंड नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी टू बी लर्नड एज ए नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी बा हिंदी कौन हम ना नेशनल लैंग्वेज भाव में पिलामानंकु शिक्षा दिया। 10 द करिकुलम एडवोकेटेड बाय गांधीजी आज मोस्टली गिव इम्पोर्टेंस ऑन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड टू मेक द चाइल्ड सेल्फ सपोर्टिंग जो करिकुलम गांधीजी एडवोकेट करते सेटा होची पिलामानंकर सर्वांगीन विकास एवं सेल्फ सपोर्टिंग पाई उद्दिष्ट थिला। नेक्स्ट लेट्स नाउ डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग एडवोकेटेड बाय गांधीजी। द मेथड्स ऑफ टीचिंग गांधीजी एडवोकेटेड नेचुरलिस्टिक अप्रोच इन द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग His basic education may be regarded as a technique of teaching in itself. He seems to be in favor of the following things regarding methods of teaching. The first thing is mother tongue should be the medium of instruction. এটা আমি আগে কই সারিলা মানে second point is education should be given through the medium of some craft or productive work. Third point is the maxims like learning by doing, learning by living, learning through self experience etc. should be find proper place in methodology of teaching. कौन रहा दरकार ना लर्निंग बाय डूइंग किसी काम करवा एवं शिक्षा ग्रहण करवा लर्निंग बाय लिविंग कहले जीवन बंचापी किसी शिक्षा ग्रहण करवा एवं लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस निजर आत्म अनुभूति साहाय्य शिक्षा ग्रहण करवा। नेक्स्ट आसूची वी मस्ट टीच रीडिंग एंड ड्राइंग बिफोर राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग ड्राइंग निश्चय जानिबा दरकार बिफोर टीचिंग बिफोर राइटिंग वी मस्ट टीच रीडिंग एंड ड्राइंग बिफोर राइटिंग लिखा पूर्व आम पे रीडिंग और ड्राइंग शिखेवा आवश्यक। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द माइंड शुड फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट इज कोरिलेशन शुड बी ट्रीटेड एज द मोस्ट यूजफुल एंड एसेंशियल टेक्निक ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज लेक्चर क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड्स मे बी यूज्ड फॉर इम्पोर्टिंग इंस्ट्रक्शन। तेणु एगुड़ाक सब थिला कौन ना मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो गोटे कनक्लूजन तापर लिखापी पड़ो व्हाट इज द कनक्लूजन द कनक्लूजन शुड बी रिटन एज देयरफॉर फ्रॉम द अबव द एनालिसिस इट कैन बी सेड दैट बोथ द करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एडवोकेटेड बाय गांधीजी give much more emphasis on the all-round development of the children and after receiving education they are eligible for the livelihood। से माने निज निजर जीवन धारण करने जमी एलिजिबल हे शिक्षा ग्रहण कर सारा पर शिक्षा समाप्ति पर। तेणु यही पिला मैंने तुम हवा दरकार आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 6 नंबर क्वेश्चन कौन थी ना डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। सेमती आंसर केमती लिखा ना प्रथम इंट्रोडक्शन टी दवा दरकार मीनिंग पाखक आसवा। प्रथम कौन लिख ना लर्निंग इज यूनिवर्सल इन नेचर इट इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली इन फैक्ट ऑल लिविंग क्रिएचर्स लर्न एनिमल्स हैव अ कैपेसिटी टू लर्न एनिमल्स कैन लर्न सिंपल एक्ट्स वेयर एज मैन इज कैपेबल फॉर लर्निंग वेरी कॉम्प्लेक्स एक्ट्स। Man is endowed with intelligence, reason and other higher mental processes and so learns the most. Let's now discuss the meaning of learning. The meaning of learning can be better understood from the following definitions. तो meaning टा केमी जानबा ना केते गोटे definition दबा जेहेतु आमर meaning ऊपर इम्पोर्टेंस दिया क्वेश्चन तेणु मीनिंग लिखा डेफिनेशन निहाती आवश्यकता रही। तेणु एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कौन कौन अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च लर्निंग रिफर्स टू द ग्रोथ एंड decay of interest knowledge and skills and to the transfer of these to new situations. According to B.F. Skinner, learning is a process of progressive behavior adaptation. And according to Crow and Crow, learning is the acquisition of knowledge, habits and attitudes. It involves new ways of doing things and it operates in an individual's attempt to overcome obstacles or to adjust to new situations. So these are the definitions of learning, important definitions. Thus from the above definitions it can be said that learning occupies an important place in psychology because psychology deals with the understanding, controlling and predicting behavior and learning is permanent and purposeful modification of behavior. Education is the modification of behavior but learning is the permanent and purposeful modification of behavior. Then let's now discuss the nature of learning. What are the nature of learning? Nature of learning, the nature गोटे heading लिखिबो जे nature of learning. The nature of learning can be described as under. The first point is first nature is learning is purposive. Learning is it signifies that learning is a goal directed or purposive activity. All learning has a purpose. Learning without purpose is unsuccessful.
द परमानेंसी ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस। तेणु गोटे उद्देश्य शिक्षण हूँ कौन ना उद्देश्यात्मक। तेणु जब गोटे उद्देश्य नथो तार शिक्षण हम ना। सेकेंड पॉइंट हूँ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट मीन्स लर्निंग इज कंटिन्यूअस इन नेचर। इट स्टार्ट्स विथ बर्थ एंड कम्स टू एन एंड व्हेन द इंडिविजुअल डाइज। नेक्स्ट नेचर इज लर्निंग इज इंटेलिजेंस। It means all successful learning is intelligence. An individual can learn quickly and easily if he employs his intelligence. We fail to learn because we fail to understand. जो आम कि बुझी न पारिबा ताले आम लर्निंग करि परिबा नाही। The next point is learning is organization of experiences. It means in learning the individual comes to have new experience but he examines them in the light of his previous experiences. This enables him to have his own individual pattern of learning. Thus, learning is organization of experience. The next nature is learning may be correct or incorrect. It means learning may be correct or incorrect, right or wrong, socially desirable or undesirable. What we learn may not be good or correct always. We learn good as well as bad habits. Learning need not be necessarily conscious or deliberate. We learn certain mistakes unconsciously, but true learning is correct, desirable, conscious and deliberate. Education or true learning aims at modification of a behavior which is desirable and socially acceptable. The sixth nature is learning is adjustment. It means learning is nothing but adjustment. The individual has to adjust himself to a changing environment and he tries to meet a new situation. The next nature is learning is universal. It means learning is universal in nature. All animals learn. Though man is a national animal, he can learn the most complex arts. The next nature is learning is an organization of experience. In learning, the individual comes to have new experience, but he examines them in the light of his previous experiences. This enables him to have his own individual pattern to learning. This learning is organization of experience. So the other points are also there. If the other points you may write, it is also correct. So मोर कहर उद्देश्य होची जे मु जो पॉइंट गुड़ा डिस्कसन कली यही पॉइंट मैंने निश्चय लिखिथब से माने मार्क जे पाइब से कथा नुहे जे अलग आहरी मध्य नेचर रही जो माने अलग नेचर लिखिथिबो मध्य सेतिरे मार्क पाई परिबो. So, thus from the above discussion it can be concluded that learning is a continuous and lifelong process. All learning is a change in behavior, but all change in behavior is not learning. Learning is a permanent or desirable change in behavior. Learning is a purposeful activity. तेणु learning is a change in behavior, but all change in behavior is not learning. कहीं कहूँ ना learning is a change in behavior जे तुम व्यवहार परिवर्तन होची शिक्षण. तेणु जे प्रत्येक परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन आम शिक्षण आसी न था केमी रही तार कारण कौन ना केते गुड़े कारण रही जे आम व्यवहार परिवर्तन जो गोटे लोक बा गोटे व्यक्ति जो मद पी देउची केतबेले मेडिसिन रिएक्शन करुच्ची केतबेले क्या ब्रेन मलेरिया होची बा बाउली चाउली होची सेतबेले तार व्यवहार रे परिवर्तन आसूची. तेणु ये गुड़ाक नुहे जे लर्निंग. तेणु से कहूँ लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर बट ऑल चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लर्निंग. तापर नेक्स्ट हूँ कौन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन. What is value education? Discuss its types with examples. So, फास्ट प्रत्येक जो क्वेश्चन आंसर पे लिख तुम तो ये परीक्षा सरी जाइए जो +3 पढ़ जेकोसी पाठ पढ़ो से तुम क्वेश्चन आंसर लिखला बेले केमती लिख गोटे आग इंट्रोडक्शन दब क्वेश्चन क्या डिमांड करीटा को गुरुत्व दब आग किंतु इंट्रोडक्शन लिखा दरकार. लेट्स नाउ डिस्कस द 7th क्वेश्चन व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन. डिस्कस इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स. The term value has several connotations but not has a simple unitary meaning. Value signifies neither a thing nor an individual but thought or point of view. Anything which is useful to a person becomes a value to him. Value has both usefulness and utility. Anything or everything which are good, useful, important, that signifies value. From the educational point of view, it means educational value. तेणु भैल्यू कहले कौन ना भैल्यू गोटे पर्सन बा गोटे जिनिस को बुझाए ना जे इट इज ए थॉट और पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहुच्छे जे गोटे चिंताधारा बा पॉइंट ऑफ व्यू को आम भैल्यू बोली कही था. अकॉर्डिंग टू J.S. ब्रूबेकर
To state on its aim of education is to state his educational value. According to Bertrand Russell, the choice before present humanity is either total annihilation or coexistence through ethical and spiritual values. According to R.K. Mukherjee, values are socially approved drives and goals that are internalized through the process of conditioning, learning, or socialization and that becomes subjective preferences, standards, and aspirations. Thus, from the above definitions, it can be said that values have the following characteristics. Like a value has its worth and importance, a value is subject, community, and national oriented, a value is the means as well as an end, value is desired preference, and a value is cherished idea. Then let's now discuss the types of values with examples. Types of values. Values are of the following types. The first type is aesthetic value. What is aesthetic value? According to John Keats, a thing of beauty is joy forever. Man reaches to everything he sees, he hears, or senses. He makes aesthetic judgment of beauty, decides what is beauty and what is not. His appreciation of beauty is known as aesthetic value. For example, by enjoying the rising of sun, seashore, place of monuments, we derive pleasure which has aesthetic value. ତେଣୁ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କହିଲେ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କହୁଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠୁ କରୁ ନା ବାଇ ଏନ୍ଜୟିଂ ଦ ରାଇଜିଂ ଅଫ୍ ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଆସୁଛେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଛି। ସି ସୋର୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। So, second types of value is social value, which includes the individuals constitutes the society which has certain ideas, models, and norms. In general, in respect to behavior, love to humanity, universal brotherhood, sincerity, honesty, and integrity of character. The aim of education is to inculcate social values. Activities like NCC, NSS, Scouts, and Guide, which help the students to develop themselves physically and prepare for safety and security. Social values have been emphasized at every stage of social development. The next type is eternal value. Eternal values builds the man with beauty, joy, and truth. The best aim of a man is to be joyful at each time. Idealists consider three jewels as truth, goodness, and beauty. These are all called as Satya, Shiva, and Sundara. These values are eternal and spiritual, which cannot be changed. These are eternal as remains from time immemorial, continuing now and will remain in future. Such values are permanent and unchangeable. Eternal कहले जो चिरंतन सत्य जोड़िक रही। The next type is ethical value. It means ethical value deals with the problem of good and evil. Plato states it is not the ethical knowledge or sciences but that brings happiness and knowledge of good and evil. The next type is spiritual value. The main objectives of education is to inculcate spiritual values among the children. Gandhi brought with the weapon of spiritualism, non-violence, and peace without bloodshed. The realization of a fatherhood of God and brotherhood of man is sure to make man happy and prosperous. The great saints, sages have emphasized on the spiritual values. If our education system inspires children the spiritual values, contentment will be the result. People can lead a happy life. So, attempts should be made to reach the fundamental truth like a reverence, restraint, broad-mindedness, truth, tolerance, cooperation, and non-violence, etc. to our children, as a result of which they fight against materialism. The next type is moral value. Moral values includes the clean behavior of man. From moral experience, moral values are drawn to judge the right and wrong. Moral values are evoked. According to Taylor, the child develops moral values in direct ways. The example of moral values are truth, honesty, justice, non-violence, cooperation, etc. So, conclusion, how the conclusion can be written? Thus, from the above analysis, except the above values, the other values are also found like internal values, external values, economic values with health value, etc. So, values plays an important role in educational process. Then the next question is your statistics and of your fourth unit.
द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर केमती लिखा पे ना एमती लिखिदेल फॉलोइंग स्कोर गुड़ लिखिदेल जे क्लास इंटरवल केमी रही ना क्लास इंटरवल लिखिदेल फ्रिक्वेंसी देल। प्रथम कथा हूँ जो मीडियन बाहर करार अच्छे से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निर्णय कराए। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी केमी निर्णय कराए ना आग देख क्लास इंटरवल गुड़िक बड़ू सान क्रम अच्छी ना सानू बड़ क्रम अच्छी केमी अच्छी ये क्लास इंटरवल गुड़िक अच्छी बड़ू सान क्रम। तेणु क्लास इंटरवल कौन हो 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19 and 10 to 14। सो क्लास इंटरवल आरेंज होना बड़ू सान क्रम। तेणु ये प्रथम कौन करना ना जो आम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बाहर करे से सानू बड़ क्रम फ्रिक्वेंसी गुड़ी को कौन करवा मिसई मिसईकी जीवा केमती हम ना प्रथम क्लास इंटरवल रही 5। तेणु ये आसला 5 तापर 5 + 6 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 8 = 26, 26 + 6 = 32, 32 + 5 = 37 and 37 + 3 = 40। तेणु लास्ट क्लास इंटरवल बा हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जी हम तुम एन रैल्यू से जदि कौटी एपट सेपट है जान ये कौटी भूल रहीगला। तापर कौन करवा पे ना द फॉर्मूला लिख द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - f/fm × I। ताको तार डेरिवेशन लिख वेयर मीडियन इज इक्वल टू द मीडियन, L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड f इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल बिलो द मीडियन क्लास एंड fm इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन क्लास एंड I कहले I means size of the class interval। Here L is equal to 24.5 केमिति ना L कहले लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आम मीडियन क्लास क्या ना व्हेयर n/2 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दी n/2 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन कर ना जो कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीटा n/2 संगे सामान होठार अधिक हो। तेणु ये n है के 40, 40/2 है के 20। तेणु आमर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो 20 बा 20 ठार अधिक हो। तेणु मीडियन क्लास आम क्या नवा ना ये गोटिक नवा 26 अच्छी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तेणु ये गोटिक नवा कौन ना मीडियन क्लास। ताले लोअर लिमिट के ना एपटे 2.5 माइनस करदे हम कौन ना लोअर लिमिट पाइबा। तेणु 25 जेहतु अच्छे 0.5 माइनस कले हम 24.5। तेणु लोअर लिमिट है के ना 24.5। n/2 हूँ 40/2 = 20 एंड fm कहले कौन ना fm हूँ 8 एंड f हूँ 18। ये I हूँ साइज ऑफ द क्लास इंटरवल हूँ 5। तेणु fm कहले कौन ना fm कहले कौन आम कहीचे ना फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तेणु मीडियन क्लास आम क्या नहीं ना 25 टू यहाँ आम नहीं 25 to 29 यहाँ नहीं जेहतु मीडियन क्लास ताले fm कहले फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तेणु 8 तापर एफ कौन नहीं ना एफ हूँ 18। एफ कहले कौन ना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल बिलो द मीडियन क्लास। आम नहीं मीडियन क्लास नहीं यहाँ। तेणु से क्लास इंटरवल तल क्लास इंटरवल सान क्लास इंटरवल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज 18। बुझीपार पे मैंने कहार भैल्यू केमी बाहर। तेणु आम जेहेतु भैल्यू पाईगले कौन करवा ना लेट्स पुट द भैल्यूज इन द फॉर्मूला। आउ आई हूँ के ना आई इज द 5। आई कहले कौन ना साइज ऑफ द क्लास इंटरवल हियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 केमी ना 40 to 44 रे क्लास इंटरवल आ 5 साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है 5 बा जेकोसी कंजिक्यूटिव 40 ରୁ 35 माइनस करदे हम 5 बा 44 ରୁ 39 माइनस करदे हम 5 बा 30 to 25 माइनस करदे 5 बा 35 to 30 माइनस करदे हम 5। तेणु साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 5। देन लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू आउ थे लिखा पड़ो फॉर्मूला L + n/2 - f/fm × I। हियर L इज इक्वल टू 24.5, n/2 इज इक्वल टू 20 एंड f इज इक्वल टू 18 एंड fm इज इक्वल टू 8 एंड I इज इक्वल टू 5। देन 24.5 + 2/8 × 5 20 - 18 इज इक्वल टू 2/8 × 5। देन 24.5 + 5 को मल्टीप्लाई करदे 2 रे 10/8। देन 24.5 + 1.25 देन द आंसर इज 25.75। बुझिपार पे मैंने
तापर कौन लिखा ना सो द मीडियन ऑफ द एबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 25.75 मुझे तुम मानकर जो पूर्व वीडियो करी जे ए वर्ष मीडियन आसो बोलिक ठीक आपण तुम सब से मीडियन ही आसी तेणु मुझे भल भाव में वीडियो करके तुम मीडियन क्लास नहीं जब बुझे देती मीडियन केमी कैलकुलेसन हम और कही ए वर्ष मीडियन आसो बोली तेणु तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज द आंसर शुड बी एज रिटन एज knowledge construction is a process by which learners actively build their understanding of a topic or concept through exploration, reflection and interaction. It involves constructing meaning from the informations and experiences gained through learning activities and projects. Constructivism is the theory that says learners construct knowledge rather than just passively taken in information. As the children experience the world and reflect upon those experiences, they build their own representations and incorporate new information into their pre-existing knowledge. Students learn by connecting new knowledge with knowledge and concepts that they already know, thereby constructing new meanings. Research suggests that students connect knowledge most effectively in active social classrooms where they negotiate understanding through interaction and varied approaches. The following points can prove that learning as a construction of knowledge. First point is psychological process start as social process. According to Vygotsky, children begin learning from the people around them, their social world, which is the source of all their concepts, ideas, facts, skills and attitudes. That social world once culture determines which stimuli occur and are attended to. Each culture selects differently. The next point is from other regulated to self-regulated behavior. It means Vygotsky's emphasis on the role of adults in influencing the cognitive development of children is the origin of Forsten's ideas about mediated learning. In this view, cognitive development should be enhanced when children work cooperatively or collaboratively with adults and other children, and such enhancement does appear to be the case. Cognitive development proceeds from other regulated behavior to self-regulated behavior. Then Vygotsky social situated learning. First point is knowledge, which includes social constructed knowledge built on what participants contribute, construct together. Knowledge is constructed internally and externally. Second point is learning, which includes collaborative construction of socially defined knowledge or values. Second is which occurs through socially constructed opportunities. And third is guided discovery in the classroom. And the third point is teaching, which includes co-construct knowledge with students. Second point is applying construction in facilitating learning. The next point is applying construction facilitating learning, which includes it aims to make learners understand a few key ideas in an in-depth manner rather than taking up so many topics superficially. Next is give varied examples. Next is provide opportunities for experimentation. Provide lots of opportunity for quality interaction. Have lots of hands-on activities. Relate your topic to real life situations. Don't depend on the explanation method all the time. So it is the how learning as construction of knowledge. Explain. This question is over. The next question is discuss the role of education for promoting national integration. What is the role of education in promoting national integration? The answer is education plays an important role in developing our nation and also promoting national integration in the nation. National integration is unity in diversity. It means social, political, economic, linguistic and cultural unity. It refers to a haven of freedom where the world has not been divided into fragments by narrow domestic wells.
According to J.S. Brubaker, national and emotional integration may be defined as a feeling of oneness in which the differences of culture, classes, languages, religion are seen emotionally in one compact whole. Let's now discuss the role of education for promoting national integration. Role of education for promoting national integration. Education can promote national integration in the schools in the following ways. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ମିନିଂ ରହିବା ଦରକାର, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତା ଉପରେ ଆସିବା ଦରକାର। Education can promote national integration in the schools in the following ways. The first way is special stress on the teaching of social studies. ତେଣୁ through social studies we can promote national integration among the students. The teaching of social studies at all levels like the primary, secondary and university stages would impart knowledge of the geographical, historical and cultural background of the country and of the world as a whole. Books on social studies should include references to the lives and works of the great men of India and of the world, and also stories from ancient books like Mahabharata and Ramayana. Second point is uniform curriculum. It means the school and college curriculum should be reoriented to suit the needs of a secular state. Where there is a uniform, there is no discriminancy of feeling between the students. So uniformity in dress by uniform curriculum should be imparted. Uniform curriculum should be imparted to all the students. The next is textbooks. Textbooks play their legitimate role in strengthening emotional integration. It is necessary that they be oriented and improved. In the preparation of a history textbooks, special care need to be taken to see that facts are not misinterpreted, distorted or exaggerated to create prejudices. The get-up as well as the content of textbooks require a change. At the primary level, the textbooks writers should make a liberal use of pictures and illustrations so as to create interest in the child at the very outset. So ଯେତେବେଳେ टेक्स्ट बुक पब्लिश करा जाउछि सेतेବେଳେ प्राइमरी पिलामक पई कोन करबा दरकार विभिन्न प्रकार पिक्चर रहबा दरकार इलस्ट्रेशन रहबा दरकार जहाँ द्वारा कि पे माने इंटरेस्टेड हेबे। नेक्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटीज। The place of co-curricular activities in the curriculum is considered to be the very important. The participation in co-curricular activities helps in the growth of a well-balanced and well-adjusted personality. The co-curricular activities include common observance and celebration of national festivals and events of national importance, sports, educational excursions, tours and picnics, NCC, SCC, Scouts and Guides, NSS, students camps, etc., which includes the students, and the students are eligible to develop their personality through the co-curricular activities. लाइक एबे तुम सब होता जो नुआ प्रोग्राम रे जो सब कार्यक्रम सब होता जमी स्पोर्ट्स डिफरेंट कंपिटिशन्स सी हूँ सेगुड़ा सब क्या सीना को करिकुलर एक्टिविटीज आसूचे। तेणु सेटा सीना आम कॉलेज लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल सब करागला किंतु स्टेट नेशनल लेवल गुड़ा सब करा आवश्यक जहाँफल नेशनल इंटीग्रेशन रक्षा करा जाई परिबो बा पिला मानक भितर नेशनल इंटीग्रेशन बा जातीय संगति भावना जागृत करा जाई परिबो। Then school uniform. It is desirable to have a uniform for school children. One common uniform for the whole of India is necessary. Schools may have their own preference in regard to color and pattern. So टिके पूर्व मुझे कहती जे गोटे यूनिफॉर्म को पाठ्यक्रम जमी रहा दरकार सेमती यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म रहा दरकार जहाँ फल कि पिलामानक भितर किसी पार्थक्य आसब नहीं बा किसी भावना आसब नहीं जे मु भल ड्रेस पिंधि से खराब ड्रेस पिंधि ये मध्य किसी भावना आसब नहीं। नेक्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज। द नेशनल डेज लाइक January 26 which is named as Republic Day, August 15 the Independence Day, October 2 Gandhi Jayanti, so November 14 Children's Day, September 5 Teachers Day should be celebrated in the schools with the full participation of the teachers and the students and the community. Next is national flag. The national flag is also known as the emblem of national importance. The students should also know the rules to be
followed when our national flag is hoisted। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଟଟ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଇନ୍ unison and behave in disciplined way when it is sung। They should also be taught the meaning of the verses। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଥେମ୍ଟା ଆମେ ବୋଲିଦେଲେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ, ତା'ର ମାନେ ବା ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 6 ମାର୍କସ୍, ତେଣୁ 6-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ନା, ବିସାଇଡ୍ସ ଦ ଏଭୋଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଦ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, taking pledge, open air dramas, students exchange and tours, free trips and scholarships, all India award, interstate tours and competitions etc. should be organized in the school for promoting national integration। So this is the answer of your long question। जो मानकर पिला माने तुमने इंटरेस्टेड जे लॉन्ग क्वेश्चन विषय रे तुमने लिखा बा पढ़ा, तेणु मु डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दे देबी, पीडीएफ लिंक रो तुमने निजे मध्य नोट प्रिपेयर कर पारिबो। ए क्वेश्चन आंसर मध्य तुम भविष्य आउ जदि पुणी एजुकेशन ऑनर्स नहीं पढ़ले तुम मध्य काम रे लागिबो। तेणु वीडियोटी को भल भाव देखिबो, आरंभ शेष पर्यंत देखिबो एवं सब्सक्राइब कर दो। जो मैंने बहुत पिला अच्छा वीडियो गुड़िक देखुच कि सब्सक्राइब करना से अनुरोध वीडियो को सब्सक्राइब कर तुम सांग पाखु शेयर कर। थैंक यू ऑल।